Welcome to topic 5 of our fitness course, nervous system. Basically, nervous system comprises of two things. Nervous system basically क्या होता है? When your brain sends signals to your body to react in a certain manner. For example, मैं हाथ उठा रहा हूँ. Whatever I'm doing, I'm balancing. मैं आगे झुक रहा हूँ, my core is contracting. ये सब nervous systems के through brain signaling होता है to these particular. मैं चल रहा हूँ, right? तो क्या हो रहा है कि there is a brain in place, we have a brain and then we have a spinal cord, right? तो we have two kinds of system. One is central nervous system जो हम बात कर रहे हैं. So from the brain, it is in the spine. Those nerves in the spine is called CNS, central nervous system, and the other one is peripheral nervous system. Peripheral nervous system मतलब क्या? अपने arms and legs की तरफ जो nervous system है is peripheral nervous system. ये कैसे हो रहा है? बेसिकली व्हाट इज द वर्क ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल छोड़ता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सिग्नल्स देता है. सो डिपेंडिंग ऑन द सिग्नलिंग फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन, उससे वो सिग्नल्स को ब्रेन प्रोसेस करता है एंड देन इट गिव्स आउट द सिग्नल ऑफ व्हाट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज सपोज टू डू. समझे? सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. नाउ हम लोग और इसके डीप में जाएंगे. करेक्ट? सो नर्वस सिस्टम, जैसे मैंने कहा, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. करेक्ट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स आर ब्रेन एंड स्पाइन. These are pretty straightforward, right? Brain है, spine है, वहां से nerves जा रहे हैं and then they are spreading throughout the body. Great. Peripheral nervous system is where things get interesting. Peripheral nervous system is again divided into two parts, right? Automatic, somatic. What is automatic? Automatic मतलब involuntary, right? Let's say हम लोग फूड डाइजेस्ट करना. डू यू हैव टू थिंक कि अगर आपने अपना हमने भी खाना खाया तो उसको डाइजेस्ट करना है? यू डोंट हैव टू थिंक. आप सो रहे हो, द ब्रीदिंग एंड एवरीथिंग जो ऑटोमेटिकली हो रहा है, मेटाबॉलाइजेशन ऑफ फूड, राइट? योर यूरिनल सिस्टम, वो सब ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, राइट? दैट कम्स अंडर ऑटोमेटिक. सोमैटिक, देयर इज वन मोर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक, मैं बताऊंगा. सोमैटिक इज वॉलेंटरी. व्हाट इज वॉलेंटरी? मैं बता रहा हूँ कि हाथ को ऊपर लेना है या मुंह बंद करना है और वर्कआउट करना है. दैट इज वॉलेंटरी. व्हाट डज सोमैटिक? सोमैटिक मीन्स वॉलेंटरी मूवमेंट जो होता है इज सोमैटिक. ऑटोमेटिक में अगेन देयर आर टू टाइप्स. वन इज सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, राइट? मैंने जो कहा था डाइजेस्ट, रेस्पिरेशन, यूरिनल, ये जो ऑटोमेटिकली हो रहा है विदाउट यू अंडरस्टैंडिंग और नोइंग comes under parasympathetic. So it is involuntary and the basic systems of the body. Sympathetic में this is majorly fight or flight response. The response is right. किसी ने आपको पंच मारा, you are like reflection. कुत्ता पीछे से आ रहा है, you are running. It's a fight or flight, right? कोई भी आपको गिर रहा है, you are ducking. So this is involuntary response of your brain. How does that happen? This is called sympathetic response of your brain. जो आपको सोचना नहीं पड़ता है, right? Whenever, let's say, अगर कुछ सब गाड़ी जा रही है, you are pulling the leg out, कैसे कर रहे हो? That is parasympathetic nervous system sending the signals to the nervous system and you are enacting, right? So this is the major dividers of the nervous system: CNS nervous system and central nervous system and peripheral nervous system.
Peripheral nervous system में we have somatic, we have automatic. Automatic है, somatic मतलब क्या? Voluntary, working out and all is somatic. Automatic में again two types, digestion, urinal or respiration, all of the systems. Parasympathetic, sympathetic is fight or flight system, right? इस तरह से nervous system ये होता है. Moving ahead, I'm going to talk about are how is your brain receiving signals from the parasympathetic nervous system. Parasympathetic, let's say we are talking about brain and spine. Then we have the body. Diagram को थोड़ा आप समझ लो. I'm not from. So how is the signaling going from here to the brain, and then how is the output coming out, right? How is the entire process happening is also very important, no? Because how are these systems connected, making sure that your coordination and everything is coming. So this system is something that we'll talk about now, right? In somatic, we have further division of proprioceptors, extroceptors, इंट्रोसेप्टर्स. क्या बेसिकली ये तीन क्या होता है? प्रोप्रियोसेप्टर्स आर बेसिकली द, लेट्स से मैं सीधा खड़ा हूं, राइट? मैं आगे झुक रहा हूं. हाउ इज माय ब्रेन अंडरस्टैंडिंग टू बैलेंस दिस आउट? बैलेंस हो रहा है ना, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इन द सेंटर, दैट्स व्हाई आई कैन एबल. मैं आगे झुक रहा हूं तो ऐसे आगे नहीं झुक रहा हूं ना, माय हिप इज गोइंग बैक. हाउ इज दिस बैलेंसिंग हैपनिंग? बाय proprioceptors which are present in my body. They are sending the signal to the brain and it is balancing. What is extroceptors? Extroceptors are basically the sensations that I feel, the sensations, the light sensations, the air sensations. ये जो feeling आ रहा है, these are basically extroceptors. Introceptors क्या हो रहा है? Let's say the internal organs. आपके हाथ में suddenly pain आ रहा है, टेनिस हो गया, यहाँ पे गर्म हो रहा है, you are feeling a pain sensation. Hunger आ रहा है, and then you are feeling a little cramp in the stomach. थोड़ा हंगर सेंसेशन आ रहा है. वो ब्रेन को कैसे समझ रहा है? इस थ्रू इंट्रोसेप्टर्स. तो इंट्रोसेप्टर से इंटरनल सेंसेशंस ऑफ द बॉडी गोज टू द ब्रेन and then it gives a pain sensation. Extroceptors are the feel, touch, those sensory organs. वहां से again signaling to the brain and then we understand कि अच्छा ये चल रहा है. Proprioceptors are basically the balancing mechanism of the body. Proprioceptors say the brain understands how the body should be balanced so that you don't fall down. These are the three major divisions of somatic nervous system. उसके बाद automatic में we are again differentiating them by sympathetic and parasympathetic. This completely makes peripheral nervous system, and the second one central nervous system. This is entire nervous system in a nutshell. The next thing we'll be learning will be about energy systems. Energy systems is majorly carbs, fats, proteins. तुम लोग का शॉर्ट टर्म एनर्जी कन्वर्जन, लेट्स से वर्किंग आउट के टाइम क्या यूज हो रहा है, मैराथन के टाइम क्या यूज हो रहा है. ऑल ऑफ दिस इंटरेस्टिंग थिंग्स विल टॉक अबाउट in the next coming chapter.